Hello students, this is Suvendu, your physics mentor, and this is our first class of class 11 physics as per CBSE syllabus, and our first chapter is units and measurement. So let's have a look. In this 1 year journey, actually you have to face this syllabus. This is your syllabus, and this is the syllabus of 2025-26, and recent syllabus is not being uploaded till date. It is not available in CBSE website. That is the syllabus of 2026-27, and this is the previous year syllabus. So as per this syllabus, this is our first chapter, units and measurement, and here so as per NCERT guideline, you have to cover up this much thing in first chapter, that is units and measurement. So our first topic is need for measurement, that is units of measurement, system of units, SI units and fundamental units and derived units, significant figures, determining the uncertainty in results, dimensions of physical quantities, dimension analysis and its application. And in this part, we will discuss 4 applications. 4 applications of dimensional analysis. So now we will start this thing from the physical quantity. From the very basic thing, we will start. That is, the first term is physical quantity. What is the meaning of quantity? Now listen, quantity means some amount or strength. It means amount or strength. And physical quantity means quantity which we can measure directly or indirectly. Now, what is the meaning of direct measurement and indirect measurement? So, first thing, what is measurement? Now we will discuss after this physical quantity topic. So, direct and indirect measurement means, if I will say this is suppose certain length, if I will ask measure the length of this substance, so this can be measured directly with the help of scale. So with the help of scale, let length is equal to 10 centimeter. So by the help of scale, measuring scale. Yes. So this is called as direct measurement. And indirect measurement means, if I will ask determine the speed. So speed का formula क्या है? Distance by time. Distance traveled divided by time taken. And the important thing is, first we have to find the distance traveled by the body and time taken to cover that distance, and after that you have to divide these two things, and the final result will be the speed value. So this is called indirect measurement, and this one is direct measurement. So physical quantity means quantity which we can measure directly or indirectly. And remember, these quantities helps us to define the laws of physics quantitatively. These quantities helps us to define laws of physics quantitatively. What is the meaning of quantitative and qualitative? There are two things. Qualitative means descriptive idea, okay, and quantitative means the measuring value. Measured value, we have to measure it perfectly with the help of measuring devices like this. And there are so many physical quantities in physics: speed,
momentum, velocity, acceleration, force, etc. What you have already read in up to class 10. Refractive index, all are physical quantities. So this is all about the introductory idea regarding physical quantity. So this part is clear. So now we will discuss what is the meaning of measurement. What does it mean? See. What is the meaning of measurement? So remember, first you see this example. Let this is a substance, and as per the measuring scale, the length is equal to 10 centimeter, or the length is equal to 12 centimeter. Suppose the length value is equal to 12 centimeter. Remember, this can be written as 0.12 meter. Yes. So this length is termed as your physical quantity. This length is equal to, this is your physical quantity. And the length of the substance को measure करने के लिए we can take the help of the unit meter or centimeter. ये एक unit of length. This is also another unit of length. ये तुम्हारा SI unit. In today's class we will discuss. And this is your CGS unit. What is the meaning of SI unit or MKS unit, CGS unit, we will discuss. So length, the physical quantity which is length in this case is measured by the unit meter or centimeter. So measurement means, from this we came to know, measurement means the comparison of physical quantity with its suitable standard unit. So in definition part we can write, measurement means, it means comparison of a physical quantity with its suitable standard unit. Okay. And in case of measurement, we can see if the length is equal to 12 centimeter. So from this, we came to know, we can write it as 12 into 1 centimeter. 12 into 1 centimeter. So from measurement, what conclusion we can infer? Conclusion or significance, जो भी. From this measured value, from the measured value, we can say 1 centimeter is contained 12 times in this measured value. So what is the need for measurement? We can say, give heading conclusion or significance, or you can say need for measurement. Need for measurement. It suggests how many times unit is contained in the physical quantity, in the measured value of physical quantity. और एक अच्छा चीज देखो, so in our example, the unit 1 centimeter is contained 12 times in the measured value of physical quantity, which is length. So we can write this point. Example, in our example of length of rod is equal to 12 centimeter, the unit 1 centimeter is contained 12 times in the measured value of physical quantity. So from the measured value, we can infer this data. It says how many times the unit is contained in the physical quantity. So this is about your measurement. And the measured value, from the measured value, ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है तुमको, यहीं से हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट हम लोग जब निकलते हैं ना, तो देखो यहीं से फॉर्मूला कैसा है हम लोग लिख पाएंगे. तो इन आवर एग्जांपल,
in our example, length L is equal to length L is equals to 0.12 meter. So from this we can say there are three things in this case. This is one thing, 0.12 एक data है and 1 meter भी और एक data. So three data are there. This length is our physical quantity. This length is our physical quantity. And this 0.12 को हम लोग क्या मानेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड जो मीटर ये क्या है तुम्हारा? यूनिट. तो बेहतरीन चीज क्या है इसमें, दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ये रिप्रेजेंटेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले जाओ, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P is equal to Nu. This is the generalized data. So P is equal to Nu is the representation of any type of physical quantity available in physics. Is that clear? Yes. और एक चीज देखो, this L is equal to example, this L is equal to 0.12 मीटर एंड इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर. दोनों सही है. ये भी एक यूनिट, दिस इज अनदर यूनिट ऑफ लेंथ. इन दिस केस this L is equal to physical quantity, this 0.12 is numerical value and meter is the unit, and here 12 is another numerical value, centimeter is another unit. सबसे अच्छा चीज क्या है देखो, both numerical values are unequal and both units are unequal. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N1 U1 and N2 U2. तो from the प्रीवियस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो, ये लाइन से हमको ये पता चल रहा है P इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 बिकॉज 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.12 मीटर. इट इज करेक्ट. ओके. तो इन मैथमेटिक्स वी नो, इन मैथमेटिक्स एक चीज हमको बताया देखो, इन मैथमेटिक्स वी आर परफॉर्मिंग, सपोज मैं लिख रहा हूं लेट x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसको एक्सपांड करने से क्या लिखेंगे हम लोग? इट कैन बी रिटन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू डॉट डॉट. इफ आई विल से x बाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको एक्सपांड करने से क्या लिखना चाहिए हमको? दैट मीन्स x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 इज इक्वल टू x3 बाई y3 इक्वल टू डॉट डॉट. ऐसे तो उसका रिवर्स पैटर्न देखो. इफ आई विल आस्क N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इट इज रिटन N1 U1 is equal to N2 U. So from this what we can write, which implies N into U is equal to constant. N into U is equal to constant. I think it is clear. N into U is equal to constant. In any measured value of any physical quantity, the product of numerical value along with its unit is equal to constant. And ये से एक लाइन हम लोग लिख पाएंगे, any physical quantity can be expressed in the product of numerical value and its units. This is the meaning of P is equal to NU. And here we came to know N into U is equal to constant. And यहीं से देखो एक चीज, if N into U is equal to constant, that means we can write what is N? N is equal to constant into 1 by U. And equal to and constant, ये जो चीज दिखाई दे रहा है हमको, equal to साइन एंड constant साइन, इसको हटा देने से हम लोग क्या यूज करेंगे? Proportionality symbol. So now we can write it as N is proportional to 1 by U. दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा से देखो, तो N is proportional to 1 by U. That means from this we can say more the numerical value. If I will say more the numerical value, lesser is the unit, and vice versa.
जितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका यूनिट उतना ही छोटा होगा। तो यहीं से हम लोग ये लिख पाएंगे, एज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, thus smaller the unit, smaller the unit means more is its न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो एक क्वेश्चन पे हम लोग इसको अप्लाई करने से बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझ पाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से व्हिच इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, मीटर वर्सेस सेंटीमीटर, मीटर वर्सेस सेंटीमीटर से व्हिच वन इज ग्रेटर। तो पहले देखो, we can write the relation between meter and centimeter. We know 1 meter is equals to 100 centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter। दो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक है तुम्हारा 1, दूसरा क्या है 100। तो आउट ऑफ दिस टू न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हिच वन इज ग्रेटर? 100 इज ग्रेटर। और मैं लिखा था मोर द न्यूमेरिकल वैल्यू लेसर इज द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट। इफ 100 इज ग्रेटर तो 100 के पास कौन सा यूनिट लिखा है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या होगा? लेस होगा इन कंपैरिजन टू मीटर। जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होगा? ग्रेटर। लाइक दिस। आई थिंक इट इज क्लियर। इफ आई विल से मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, व्हिच इज ग्रेटर? नाउ वी कैन से सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इज व्हिच इज ग्रेटर। क्वेश्चन क्या है? किलोमीटर पर आवर वर्सेस मीटर पर सेकेंड, व्हिच वन इज ग्रेटर। तो हमारा ड्यूटी क्या है? पहले चीज ये दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। तो कैसे करेंगे हम लोग? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। You know this thing. So after the cancellation of two zeros, remaining term is 10 by 36 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके उसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा? 2 से सिंप्लीफाई करने से 5 by 18। तो दिस इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकेंड, 5 by 18 मीटर पर सेकेंड। एंड इन दिस केस वी कैन से 1 किलोमीटर पर आवर is equals to 5 by 18 meter per second। 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second। तो ये दोनों को कंपेयर करने से क्या मिलेगा? देखो ये दोनों को कंपेयर करने से दो ही न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे रहा है इसमें। एक है तुम्हारा 1, दूसरा क्या है 5 by 18। दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो आउट ऑफ दिस 1 एंड 5 by 18 कंपेयर करो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1, दूसरा क्या है 5 by 18। एंड अच्छा चीज क्या है इसमें? 5 by 18 मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। तो व्हिच वन इज ग्रेटर? सिंपली वी कैन से 1 इज ग्रेटर देन 5 by 18। अरे 5 by 18 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा हमको बस। एंड तो 0 पॉइंट समथिंग एंड 1, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? 1 इज ग्रेटर। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इफ 1 इज ग्रेटर its corresponding unit will be smaller as per the concept n proportional to 1 by u or p is equal to nu concept। if 1 is greater its corresponding unit will be kilometer per hour। so thus kilometer per hour is less than meter per second। this is the answer। so don't think that always ये जो ऐसा यूनिट दिखाई दे रहा है हमको किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे देखो मीटर एंड सेंटीमीटर, ये दोनों को कंपेयर करने से हमको लग रहा था मीटर इज ग्रेटर। यस, बट यहीं से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे किलोमीटर पर आवर विल बी ग्रेटर देन मीटर पर सेकेंड, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू क्योंकि इसमें देखो न्यूमरेटर पार्ट भी है, न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट है। तो इन दिस वे वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। सपोज अनदर क्वेश्चन इज देयर। आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सपोज अनदर क्वेश्चन इज देयर, that is which is greater। if I will ask another question, which is greater? ये क्या है? तुमको दे रखा है
केजी पर मीटर क्यूब वर्सेस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों में से ग्रेटर कौन है? तो कैसे जज करेंगे? सेम टू सेम प्रोसीजर, फॉलोज द प्रोसीजर। तो इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा रिलेशन। तो क्या होगा रिलेशन? तो वी नो 1 केजी पर मीटर क्यूब, इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 केजी डिवाइडेड बाई 1 मीटर का होल क्यूब। सही तरीके से ऑब्जर्व करो, 1 केजी का मतलब क्या है? 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर का मतलब क्या? 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो मिलेगा हमको 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, उसका होल क्यूब कितना होगा? 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। एंड 10 टू द पावर 3 divided by 10 to the power 6, that will give 10 to the power minus 3 gram per centimeter cube. So from this we came to know, thus relation establish हो गया 1 kg per meter cube is equals to 10 to the power minus 3 gram per centimeter cube. तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल गया। देखो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू इज 10 टू द पावर माइनस 3। ये दोनों में से कंपेयर करने से हमको पता चलेगा हियर 1 एंड 10 टू द पावर माइनस 3 व्हिच इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि 1/1000, ये 1/1000 मींस 0.001 एंड ये क्या है 1, सो 1 इज ग्रेटर। इफ 1 इज ग्रेटर इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट विल बी लेसर। तो केजी पर मीटर क्यूब इज लेस देन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन शुरू से हमको ऐसा लग रहा था कि केजी पर मीटर क्यूब क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेकिन वास्तव में नहीं है। तो ऐसे ही तुमको ये फॉर्मूला को, सॉरी ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा तुमको अवेलेबल होगा क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग्स। आफ्टर दैट यू हैव टू कंपेयर द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करने के बाद यूनिट को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे एज पर द n प्रोपोर्शनल टू 1/u कॉन्सेप्ट। ये तुम्हारा p इक्वल टू एन का कॉन्सेप्ट। तो बहुत बेहतरीन चीज क्या है इसमें, वी केम टू नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, रिकॉल द कॉन्सेप्ट। We came to know any physical quantity can be expressed in terms of n equal to u, nu, product of n and u, or it can be written p is equal to n1 u1 is equal to n2 u2. That means product of n into u is equal to constant and n proportional to 1/u, inverse proportional. So if I will ask draw the graph versus n and u, what you have to do? If क्वेश्चन में तुमको दिया जाएगा ड्रॉ द ग्राफ वर्सेस एन एंड यू, तो इसका ग्राफ क्या होगा? देखो, अभी बेसिक मैथमेटिक्स हमारा शुरू नहीं हुआ है, एक लेक्चर में अपलोड करूंगा, 2-3 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का, तो हम लोग सारा का सारा डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टुडेज क्लास यू हैव टू एक्सेप्ट द ग्राफ। देखो, ये तुम्हारा y एक्सिस एंड दिस वन इज x axis, and in this case suppose n is taken along y axis and u is taken along x axis, the graph will be rectangular hyperbola। ऐसे एक का वैल्यू इंक्रीज होने से दूसरा का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जिसका यूनिट मोर द यूनिट लेसर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो, सपोज ये ग्राफ में हम लोग दो पॉइंट को जज करेंगे। देखो, ये एक पॉइंट एंड अनदर पॉइंट, ये भी एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को जज करो, समझ पाओगे। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? देखो, ये पॉइंट शो कर रहा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट इज दिस वन, दिस इज द यूनिट, इतना वैल्यू, एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आ रहा है। बट फॉर द पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट यूनिट इज स्मॉलर but the numerical value is greater. So this graph name is rectangular hyperbola, that will be discussed in upcoming classes. Wait up to that moment. So this is about our representation of any physical quantity. So with this we have completed what is physical quantity, how the physical quantity can be represented, what is the formula related to this thing, what is measurement, it is clear, physical quantity, measurement, ये सारा का सारा चीज खत्म हो गया। And specially we will discuss in next class, suppose we will discuss यूनिट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ कम टू फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स एज पर ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। व्हाट आर दे? फ्रॉम दिस the chapter is, we are approaching towards the chapter, this is the basics of the chapter actually. So types of
physical quantity. Types of physical quantity. This is our first lecture actually, and in first lecture we will cover small portion of this chapter. So as per the on the basis of measurement, on the basis of measurement, physical quantities are categorized into two groups. What are they? One is your fundamental physical quantity and दूसरा one is तुम्हारा second one is derived physical quantity. एक तुम्हारा fundamental physical quantity and second one is derived physical quantities. So first listen about fundamental physical quantities. एक चीज तुम लोग सुनो, इंग्लिश में हमारा कितना अल्फाबेट्स है? 26 अल्फाबेट्स आर देयर. तो 26 अल्फाबेट्स आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड. एंड ये 26 अल्फाबेट को यूज करके हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कर चुके हैं. एंड डिक्शनरी इज कंपोज्ड ऑफ infinite number of words. Infinite means large number of words. Okay, many number of words are available. Yes. तो देखो words available in dictionary. ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली ये 26 अल्फाबेट, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं. यस, उसको हम लोग प्रिलिमिनरी मानकर कोई भी वर्ड फॉर्म होगा उसी 26 अल्फाबेट को यूज करके ही हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे, ए से लेकर जेड तक. दैट मीन्स फ्रॉम दिस वी केम टू नो दीज आर फंडामेंटल. दीज आर फंडामेंटल. एंड ये जो वर्ड्स अवेलेबल डिक्शनरी पे है ना, दैट इज डिराइव्ड. एंड ये भी हम लोग सोच सकते हैं जो फंडामेंटल, जिसको मैं मान रहा हूँ ए से लेकर जेड तक, दे आर फिक्स्ड, देयर नंबर्स आर फिक्स्ड. पर जो डिराइव्ड, जो डिराइव्ड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड्स अवेलेबल इन डिक्शनरी, दे आर नॉट फिक्स्ड. न्यू वर्ड भी फॉर्म हो रहा है. ओके, डे बाय डे. दैट मीन्स लाइक दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर दैट इज फिक्स्ड, बट डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज का नंबर फिक्स्ड नहीं है. ये मानकर चलो. तो इसी तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं एज पर दिस कॉन्सेप्ट. तो रहने दो, बोर्ड पे रहने से तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दे आर operational definition only. Extracted from specific procedure and measurement. ऐसे मानकर चलो. Generally easily measurable quantities, easily measurable quantities are called fundamental physical quantities. Don't think that this is the definition of fundamental physical quantity. उसको मैं explain कर रहा हूँ. Yes, this is the introductory idea regarding fundamental physical quantities. No need to write the definition. Only उसका नाम याद रखना चाहिए. Okay. How many fundamental physical quantities are there? Remember, there are 7 fundamental physical quantities and 2 supplementary fundamental physical quantities. Yes. So there are 7 fundamental physical quantities.
What are they? So you have to keep this thing in mind. First is length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and last one is amount of substance. Amount of substance, or you can say quantity of matter. Quantity of matter. I think it is clear to all of you. So there are 7 fundamental physical quantities, and they are length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance or quantity of matter. And there are two supplementary. There are two supplementary fundamental physical quantities. What are they? One is your plane angle, दूसरा क्या है solid angle. So this is about your fundamental physical quantities. Another thing, देखो previous slide में हम लोग बोले थे derived physical quantity. सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोग ऐसे मान सकते हैं दुनिया में जितना फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है एक्सेप्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेनिंग क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. दैट मीन्स ये पता चल रहा है जैसे कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बट अल्फाबेट्स लाइक दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. देखो इसका ये जो एग्जाम्पल हम लोग दे चुके हैं एग्जाम्पल तो नहीं दीज आर फिक्स्ड 7 number of fundamental physical quantities are fixed. And next is derived physical quantities. देखो derived physical quantities क्या लिखना चाहिए इसमें? They are derived or these are derived. These are derived from fundamental physical quantities. And ऐसे मान सकते हो all the physical quantities except fundamental physical quantities are called derived physical quantities. Are called derived physical quantities. देखो कितना आसान हो गया. सपोज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये भी मान सकते हैं स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. देखो डिस्टेंस इज वन टाइप ऑफ लेंथ एंड टाइम ये तो फंडामेंटल ये भी फंडामेंटल. यस डिस्टेंस इज लेंथ. तो लेंथ बाय टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम दैट इज स्पीड. द स्पीड इज derived physical quantities but it is formed because of the fundamental physical quantity. This is the example. Or another example is velocity. speed ले जाओ velocity ले जाओ acceleration momentum then force then angular momentum. हम लोग जैसे कि वर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है ना इसी तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखने से 10 स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तो तभी भी वो कंप्लीट नहीं लिख पाएंगे हम लोग. बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो रिमेंबर द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. उसका एग्जाम्पल भी हम लोग लिख पाएंगे. सपोज स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड. यस मोमेंटम का यूनिट में पूछूंगा. मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम. दिस इज लीनियर मोमेंटम. मास का यूनिट किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट वो डिराइव्ड यूनिट में चला जाएगा. बट इन दिस केस unit of fundamental physical quantities
are called fundamental units. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. So this is about your physical quantities and their types. I think it is clear to all of you. Yes. So next thing हम लोग बस शुरू कर देंगे यूनिट के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्टरी आइडिया रिगार्डिंग यूनिट. I think this slide is clear. Then come to our next slide. That is our derived physical quantity. So types of physical quantity. What is physical quantity and their types? Already we have covered. Next come to unit. What is the meaning of unit? Unit means the standard measurement of physical quantity. It is the standard measurement of any physical quantity. जो भी यूनिट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए. जैसे कि हम लोग वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं मीटर क्यूब, लेकिन हम लोग यूज करेंगे सपोज लेंथ, उसका यूनिट हम लोग यूज करेंगे मीटर. मास को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं किलोग्राम. टाइम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सेकेंड, आवर. तो जो भी हम लोग यूनिट यूज करेंगे ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. What are the characteristics of unit? Remember, unit should be well defined. Unit should be well defined. Unit should be reproducible. Unit should be easily available. Unit should be universally accepted. Like this. These are the characteristics of unit. So unit should be well defined. 1 मीटर को अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए. 1 मीटर रिप्रोड्यूसेबल. 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे बस. यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल. देन इजीली अवेलेबल. अमेरिका में 1 मीटर रॉड का लेंथ जितना होगा, इंडिया में भी सेम टू सेम. That is universally accepted. So these are some characteristics of unit. Like this. And what are the different types of units? Unit क्या कैटेगराइज हम लोग करेंगे, तो it is of 3 types. बेसिकली हम लोग ये तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे. वन इज योर CGS यूनिट, दूसरा क्या है MKS यूनिट, एंड थर्ड वन इज योर FPS यूनिट. यस. तो सपोज एक्स इज एनी रीजन एंड वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं CGS यूनिट, एंड इन वाई रीजन वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं FPS यूनिट. तो कोई भी बंदा एक्स रीजन से वाई रीजन पे चला जाएगा तो दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे जो CGS यूनिट चल रहा था वो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए FPS यूनिट क्या होगा, इजीली मेजरेबल होगा. एंड सपोज जेड इज एनी रीजन, वो लोग MKS को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो कोई भी बंदा क्या होगा, एक रीजन से दूसरे रीजन पे चले जाने से थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग. वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर एस्टेब्लिश हुआ 1971 में. तो उस पर एक्सेप्ट कर रहे थे वो लोग. एक्सेप्ट क्या किए थे वो लोग, एक्सेप्ट किए थे जो भी रीजन जो भी यूनिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने दो, लेकिन यूनिवर्सली एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा हमारा, दैट इज SI यूनिट. दुनिया का कोई भी रीजन पे चले जाओ SI यूनिट तुमको मिल जाएगा. SI यूनिट पे मेजरमेंट पक्का होना चाहिए. आफ्टर दैट जो रीजन जो जिस यूनिट को एक्सेप्ट कर रहे थे उन लोगों को एक्सेप्ट करने दो, along with they all have to obey the measurement related to SI unit. So what is the significance of CGS, MKS and FPS? After that, why the SI unit is needed? That part already clear.
In next class, we will discuss in detail what is the meaning of TGS unit, FPS unit, and MKS unit. So stay tuned for next update. This is about for today's class. So kindly like, share, and subscribe this channel. This is our first lecture. So one by one, we will complete this total portion. Whatever thing is available in your syllabus, NCERT syllabus, we will complete accordingly. After the completion of syllabus, I will try to cover up the content available in entrance. Some extra concept. That is somehow error is not available in this part, but that is available in JEE. Yes, so that part. First, we have to complete all these things. पहले NCERT syllabus को खत्म करना चाहिए CBSE के हिसाब से. Yes, so I think our first lecture is clear to all of you. So thank you and have a nice day.